योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे हि कारे यथार्हन्नारोपिते अभिपूजयामः साधुनो भन्ते भगवा शुचिरपरिनिर्वृतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुर्गतपनाकारभूते पटिगह्नातु अम्हाकं दीर्घरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो उभभाग नमकारं करोमसि
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अन्मयं बुद्धानुसतिनयं करोमसि तं खोपन भगवन्तं एवं कल्याणो कीर्तिसद्दो अभुगतो इति पिसो भगवार्हन् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि थादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवति अन्मयं बुद्धाभिगीतिं करोमसि बुद्धवार्हन्त वर्तादिगुणाभियुतो योद्धाभिज्ञानकरुणा हि समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दाम्यहं तमर्णं शिरसा जिनेन्दम् बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं प्रथमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं दशस्मि दासो बुद्धो मे सामिकिस्सरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं बन्धन्तोऽहं चरिष्यामि दग्धस्यैव सुबोधितं नत्ति मे शरणं अन्यत् दग्धो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन वढ्ढेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं यदा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा पक्वमयां मतो पडिगनातो चेन्त तरे संवरितं बुद्धे अन्मयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखतो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको पनैको पच्चत्तं वेदितव्यो विज्ञोहीति अन्मयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाकाततादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यत्तिविमोखभेदो धम्मोकुलोकपठन तदधारिधारी वन्दाम्यहं तमरन धम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्सस्मि दासो
धम्मो मे सामिकिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मन्ने वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा तब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचेतसा अनेककर्मं प्रकटं मया धम्मोपटिगणात् वचयन्तं कालान्तरे संवरितं मतं मे हन्दमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगान् अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति हन्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसि धम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अट्ठविधो हरियपुग्गलसङ्गसेटु शीलादिधम्मपवरास् कायचित्तो वन्दाम्यहं तमरियगणं सुशुद्धं सङ्घो यो सबपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं सङ्घस्मिदासीव सङ्घो मे सामिकिस्सरो सङ्घसहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्घस्योपटिपन्नतं नत्थि मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सज्जवज्जेन वड्डेयं तत्तु शासने सङ्घं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं यदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचेतसा संघेकर्मं प्रकटं मया सङ्घोपटिगणात् वचयन्तं कालान्तरे संवरितं संघे रतन सूत्र का पाठ करेंगे।
අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යානිධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි වායා නිව අන්තලික්ඛේ. සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝ පිසක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං. තස්මාහි භූතානි සමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය. දිවාච රත්තෝ චරන්ති ඒ බලෙන් තස්මාහිනේ රක්ඛත අපමත්තා. යං කිංචි විත්තං ඉදවා උරං වා සග්ගේසු ආයං රතනං පනීතං. නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. khයං විරාගං අමෙතං පනීතං යදජ්ජ ගාසක්ඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ. නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යං බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානං තයිකඤ්ඤ මාහෝ. සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ පුග්ගලාට්ඨ සතම්පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති. තේ දක්ඛිනේයා සුගතස්ස සාවකා ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි. ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනං තේ පත්තිපත්ති
සත්තා අමතං විගයිහ ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යතින්ද කීලෝ පඨවින්සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේහි අසම්පකම්පියෝ තතෝපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්පමත්තා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතුං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි යදස්සිකින්චි චතෝහපායේ ච විප්පමුත්තෝ චචාභිඨානානි අබබ්බෝකාතුං ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසාවා අභබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අභබ්බතාදිට්ඨ පදස්ස උත්තා ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වනප්ප ගුම්බේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්හාන මාසේ හතමස්මින් ගිම්හි තතූපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු වරෝ අරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන
ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේකීන බීජා අවිරුල්ල චන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යත යම්පදීපෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිවහන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිවහන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි ආනිවායා නිවහන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන දුක්ඛා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන භයා උපසමින්තුතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන රෝගා උපසමින්තුතේ We'll now listen to a desana by Lungpur Prasanno, settling the mind with breath. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ Dhammāṃ Saṅghāṃ Namassāmi.
couple nights ago, Saturday night, I gave a talk using the 4 foundations of mindfulness as the theme, the basis, and we continue that theme, and particularly with concerning meditation, and mindfulness of breathing. When we cultivate mindfulness of breathing, it is, of course, it's the most common or most frequently taught method of meditation that the Buddha himself gave, and he particularly emphasized the aspect of mindfulness of breathing fulfilling the 4 foundations of mindfulness, so that using of the breath as a object of awareness and attention, but then it is being applied so that we're attending to the experience of the body, the experience of feeling, the experience of the mind, and the experience of the objects of mind or phenomena, dhammas. So that it's one, of course, it's very flexible, but it's also, it gives us something to, or a lot, not just something, but a lot to explore as we're developing our meditation and developing our cultivation of awareness in the meditation, particularly for sitting meditation, so that we can be. So often there's a tendency to, one, and quite rightly, using the language of meditation, as that we're trying to point the mind, or we're trying to concentrate the mind into one point, or we're cultivating a one-pointedness of attention, and of course those are the Buddha used those words, ekagata citta, which is oftentimes translated as one-pointed, but there's a couple things to be alert to in terms of how we inherit language and translation, and in how it affects us, and so that can end up being pretty tight, pretty exclusive, and that and that's certainly what oftentimes what we're trying to one point the mind, we tend to be trying to exclude experience, especially experience that is maybe distracting or is
maybe unsettling in some way, and that I mean certainly there's a certain fair enough kind of logic to it, but but it ends up being this idea, trying to establish the mind on a point that excludes and pushes away. Whereas, I think just changing the language of trying to bring the mind to a point that includes our experience. And it's a different way of holding attention, so that allowing because certainly when the Buddha is giving instruction on mindfulness of breathing, and then saying that it includes the experience of body, feeling, mind objects, that's a lot. And, it's not, you can't be excluding too much, or you can't be separating too much. So that sense of bringing the mind to a point that is aware, it's alert, and it is attentive to these different ways of experiencing what is arising. And sometimes what is arising is experiences of the body. Sometimes it's an experience of on a feeling tone, just pleasant, unpleasant, neutral. Sometimes it's experience of the mind, whether it's a mood of desire, or a mood of aversion, or a mood of loving kindness, a mood of kind of open generosity feeling, a mood of saying that it includes the experience of body, feeling, mind objects. That's a lot. And, it's not, you can't be excluding too much, or you can't be separating too much. So that sense of bringing the mind to a point that is aware, it's alert, and it is attentive to these different ways of experiencing what is arising. And sometimes what is arising is experiences of the body. Sometimes it's an experience of on a feeling tone, just pleasant, unpleasant, neutral. Sometimes it's experience of the mind, whether it's a mood of desire, or a mood of aversion, or a mood of loving kindness, a mood of kind of open generosity feeling, a mood of a real kind of clear analytical investigation in terms of sort of discerning. Sometimes it's confused, it's doubting, it's uncertain. Sometimes it's very expansive. Sometimes it's kind of contracted. All of those are you can use the object of attention to include that, and so that and it's still a point. It's like Ajahn Chah's description of when we're meditating, or when we're practicing, but in particular in meditation, that if we try too hard to just stop the mind, force the mind onto a point, then
it doesn't become happy, it doesn't become settled, it doesn't become steady. I said it's well, all we need to do is he said it's like taking like a chicken, and then in Thailand oftentimes what they'll do is just a wicker kind of basket that's the weave is very loose, and so they can see everything that's going around. But it's a container. It's only about, say, 2-3 feet across, and it's like a bell or a dome, and you throw a bit of rice in there, and that chicken's happy to stay there. It'll wander around a little bit, scratch here, scratch there, but it's there, and but if you tried to just get a stake and nail the with a string or something and nail it to one point, it'll struggle, it'll fight, it'll resist. And mind is similar. You want to contain it, you want it to, but you want to give it enough space that it can explore and not feel oppressed. And so with using that, like mindfulness of breathing, with the 4 foundations of mindfulness, and that sense of one pointed, bringing that one point, having it a point that includes rather than is excluding, is pushing away, is forcing too much, to bring it together into a point. And then the mind will be happy to engage in increasing levels of, as it becomes comfortable with that container, it will be happy to settle further, to become more refined, more peaceful. So that just knowing how to relate to the mind skillfully, and using the meditation objects in a way that really encourages the mind to settle on within its object of attention, and which is another word that is in terms of a translation of the one-pointedness of mind. It's sort of, sometimes it's translated, and I think more useful, is this as unification of mind, so that it is unified, and that again is where it's including, it's bringing in these other aspects of experience, of the body, of attention, of a few, and then it unifies in terms of, it's not internally struggling or fighting against itself, but it's unifying, it's settling. So that learning how to use the breath, use that as the underlying thread that ties our experience together, of the experience of the body. And there's, yes, we're rooted in the bodily experience. We're certainly aware and attentive to the different aspects of how we experience the body, but there's also this soothing thread of experience, the rhythm of the breath coming in, the rhythm of the breath going out, and as the mind say
settles or brings a certain tranquility to that experience, then it also the experience of the breath changes, and it can be at first, of course, when it can be this whole rhythm of the breath, experiencing it in the whole body, but then we start to the mind takes an interest in being more settled or being more content with an experience, just at the say at the tip of the nose, or at the abdomen, or a particular point of the body, or just it can express itself, or the experience can just be doesn't even necessarily have to be absolutely locked into our anatomical experience of how we conceive of the body, but how we experience it. What is the experience, and how can we inhabit that experience? And with the breath is also like with it's not just sort of air molecules coming into the physical body. I mean, it's also, especially with the like anapana, that word is also used in say like Hindu tradition of like a prana, as it literally means breath, but it's kind of life force. It's also kind of energy. So it's the energetics of existing from one moment to the next is experienced through the breath. But also, so it can be, again, one is not trying to lock into concretizing the breath, and sometimes just being able to experience it, just the energy of that breathing in life and breathing out life, and existing, being, and that is mindfulness of breathing. And there's many different ways of approaching that. So just again, the sense of not getting too locked in, and paying attention to that inclusion, unification, allowing the mind, the heart to settle into awareness, alertness, this quality of knowing clearly, and allowing the mind to brighten with that. And so that using the experience of the body, using the experience of feeling, and of course the Buddha, when he's giving the instructions of mindfulness of breathing, the very first instruction that he gives in terms of feeling is experiencing joy, I breathe in; experiencing joy, I breathe out. That's that experience of what is pleasurable, that is it's joyful. It's there's a certain exhilaration that one feels in a very positive way, and
Because that's it's very uplifting, it's very brightening to the mind, it's energizing to the body and the mind, and to paying attention to that. And the Buddha then moves into a bit more analytical, experiencing what's he call terms that citta sankhara, the formations of the mind, the mental formations of the mind, the constructs of the mind, the building blocks of the mind. What is it that constructs the mind? And that is that feeling and perception. Those are fundamental to the mind. We don't. Every mind moment has a feeling tone. It has a memory, association, perception. I mean, these are all mushed together. They're not. That's a particular function, a sanya, the ability to have association, associative memory. That's how we perceive things. We have a name for it. We have a label for it. But it's there. It's sort of. But it's important to experience that, to know it, to be sensitive to that, and because that's what starts the ball rolling in terms of our proliferation, whether it's analytical thought, whether it's visual imagery, or whether it's the moods of the mind. They arise out of pretty fundamental and simple building blocks. And that feeling, tone, and perception. So to be able to investigating, being sensitive to, being discerning how that works, what we call mind and what we make out of all that. It's not that complicated. Of course, it ends up complicated, but it doesn't begin that way. And to be able to come back to that root. And when we do that, we start to experience this thing we call mind. We're sensitive to the mind in a very different way. Because usually of course, whatever mood we have, it's always, that's my mood. I'm feeling, this is my thoughts. This is my mood. This is my opinion. But it's just seeing it more in a causal process, and that allows us to not get so entangled. It's not pushing away, it's not excluding, but it's by being settled within that, with having a point of, say, of unification, where there's a stability and a settled quality. The mind doesn't just follow impulsively with the impressions that arise. That's why it's important to settle, to relax, to have this experience of well-being, because then we can be content within that experience of well-being. This is one of the things about gladdening the mind. I breathe in, gladdening the mind. I breathe out, and being giving oneself that attention
the Pali words api pamodayam. Pamojayam. Pamoja is like delight, and api is an amplifier. So it's like it's not sort of low-level delight. This is you're gladdening the mind and enjoying that process of just breathing in, breathing out, being present with that, the whole experience of body, of mind. And it's allowing the mind to settle, allowing the mind to release its habits of just following likes and dislikes, following the moods of confusion or restlessness, getting caught in dullness, that's a liberating quality. We're liberating the mind, giving it the opportunity to see clearly, see itself clearly, see the experience clearly, see the world clearly. And it's and then that's where the Buddha transitions into the last section of Dhammas, of phenomena. That's anicca-nupassana, investigating or seeing clearly, seeing deeply, impermanence. Seeing deeply, experiencing clearly impermanence as I breathe in, as I breathe out, allowing that to be an object of attention. And that internalizing, and it's not just an intellectual labeling. Oh, well, that's impermanent. That's impermanent. That's impermanent. It's letting it come into the heart and settle. Oh, this is impermanent. This is uncertain. This is a not sure experience. This is changing. This is arising and is ceasing, and it's everything. And it's not. And to a certain extent, it might. Especially from the sense of self, or the sense of our habitual desires and biases, that could be really unsettling. But when it's experienced or seen from this place of inclusion and an interest in truth, then it's liberating. There's this incredible feeling of spaciousness and light arise. So that allowing, but when we turn our attention in certain ways, it lends itself to a releasing and it's just and the Buddha makes it explicit in the discourse that viraga nupassana, that seeing, experiencing dispassion or fading away, and it's a fading away of the impulses of the mind. It's not a fading away of awareness and the quality of knowing clearly. It's not a fading away of a deep
contentment with truth. And and that opens the space for it. So there's a contemplating impermanence, anicca, contemplating dispassion, contemplating cessation, ceasing, allowing things to cease, contemplating relinquishment, and patinissaga is a relinquishment, but it's a letting go. It's of the self program, a letting go of that, the I making, the mind making, that the program of propping up the sense of me. And when we are relinquishing that, each in-breath, and again, the breath is the anchor, the thread of continuity, and we can release into the sense of things being as they are. It's like Lumpur Sumero's refrain of, it's like this, and it's like this. And because the mind's always going out trying to either agreeing, disagreeing, wanting, not wanting, liking, disliking, but to come back to this a clear experience, it's like this. And the breath coming in, the breath going out, the experience of the moment as it is. And that it opens, this is what opens the doorways into the experience of a cessation of suffering, an ending of our propensity to complicate things. And it's one of the, I think the Buddha, when talking of the qualities that arise from practice and to know what is what is when the mind, our experience, is according with Dhamma, and that sense of nippapancha, just non-proliferation, non-complication, and when the mind delights in non-complication, that's a quality that's to be delighted in. There's still the experience of the body, feeling, mind, and mind objects, but it's from a very different place. This is our the practice of meditation, the cultivation of this path. Of course, the Buddha gave us these tools, these teachings, and it's up to us to cultivate them, to develop them, to make much of them, to offer that for reflection this evening.
संक्षेप में इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। लुंगफोर प्रसन्न ने शुरुआत की है बताते हुए कि जो आनापान साधना है और बहुत कॉमनली साधना तरीका है जो भगवान खुद करते थे और बहुत रिकमेंड किया था, उसको 4 सती पठान कैसे उसको करने से परिपूर्ण होते हैं, उस बात की ओर ध्यान दिला रहे थे कि भगवान ने आनापान सती सूत्र में ये बात बताई है कि तो जब ये बात कही है तो इसका मतलब हमें शरीर, वेदना, चित्त और चित्त के धम्म इन सबको जानना होगा, तभी सती विधान पुष्ट होंगे। तो जो आनापान करते समय जो एकाग्रता की बात आती है, उसमें सामान्यतः जो अभ्यास किया जाता है उसमें सारी चीज़ों, बाकी सब चीज़ें छोड़ के एक बिंदु पे ध्यान किया जाता है। तो वो एक तरह का ध्यान करने का तरीका है, उसके अपने लाभ हैं। लेकिन अगर सती पठान का, जैसे आनापान सती पठान का आधार बनाना है, तो हमको एक पॉइंट पे अटेंशन उस सेंस में नहीं करना कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, हम उसी बिंदु के ऊपर ध्यान करेंगे। जैसे सांस जो है नासिका के द्वार पे है तो वहीं पे ध्यान करते जाएंगे और बाकी सब चीज़ों को छोड़ देंगे, तो फिर सती पठान की पुष्टि नहीं होगी। तो हमको सभी अनुभव जो आ रहे हैं उन सब के प्रति, चाहे मैत्री का है कि चित्त के स्पष्ट होने का है, या चित्त का कंफ्यूज होने का है, या चित्त समाहित होने का है, या चित्त विक्षिप्त होने का है, उन सब को जानते हुए भी मन को एकाग्र रखना ताकि मन भटके ना। तो वो उसको उन्होंने कहा कि एकाग्रता का ट्रांसलेशन यूनिफिकेशन ऑफ माइंड भी हो सकता है। मन जो है एक कलेक्टेड है, इकट्ठा है, लेकिन सब चीज़ देख रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बिंदु पर टिका हुआ है। उसका उदाहरण उन्होंने लुंगपोर चा के उदाहरण से दिया कि जैसे वहाँ गांव में अगर मुर्गी को रखना है तो मुर्गी को रख के एक उल्टी टोकरी में रख देते हैं ताकि वो मुर्गी उसमें रहेगी, कहीं जाएगी नहीं, इधर उधर घूमेगी, थोड़ा दाना दे देंगे, खाती रहेगी, तो वो उसको कोई बंधन नहीं लगता वो। लेकिन अगर आप मुर्गी की टांग को बांध के किसी रस्सी से और खूंटे से बांध देंगे तो वो बहुत परेशान होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। तो उन्होंने कहा यही मन की भी वाला था, अगर उसको फोर्स करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिल्कुल बाकी सब चीज़ें छोड़ के करने की, तो वो एकाग्र हो तो जाएगा बहुत लंबे समय में, लेकिन मन शांत नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, बेचैनी बनी रहती है। तो इसलिए वो थोड़ा सा उसको हिलने डुलने का मौका मिलता रहना चाहिए। और तो जो सांस है वो एक तरह का सूत्र होता है जिससे कि सारे शरीर के जो भी अन्न और मन के अनुभव हो रहे हैं उन सबको हम जान रहे हैं और सांस को भी जान रहे हैं। और क्योंकि सांस का रिदम धीरे धीरे सूदिंग हो जाता है, सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, रिदम सा रहता है एक से, तो उससे चित्त शांत भी होता रहता है और जो अनुभव हैं विभिन्न प्रकार के वो भी अनुभव होते रहते हैं। तो जैसे उसमें आता है सब काय पटिसंवेदी, तो सारी काया को देखना है, सांस को देखना है, तो उसमें एक पॉइंट पे नहीं कर सकते, सारी काया को भी जान रहे हैं और सांस आ रहा है, जान रहा है, उसको आप कहीं किसी भी पॉइंट पे जान लीजिए या खुला छोड़ दीजिए। आप एक जगह से सांस को नासिका के द्वार पे जान रहे हैं और साथ साथ सारा शरीर भी जान रहे हैं, या आप पेट पे जान रहे हैं, या आप किसी और जगह पे जान रहे हैं, या उसको खुला छोड़ दिया, सांस का भी मालूम पड़ रहा है और सारे शरीर का भी मालूम पड़ रहा है। मुख्य बात यह है कि हम किस तरह से अनुभव कर रहे हैं, ना कि हम उसको एक ही जगह पे रोक कर खड़े हैं या नहीं। तो उन्होंने उदाहरण कहा कि हिंदू ट्रेडिशन में आनापान जो है, अपान और पान को प्राण की वायु भी कहा जाता है। तो प्राण वायु का मतलब है कि लाइफ फोर्स है, क्योंकि सांस के साथ ही हमारी जीवित के रहने की शक्ति जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम सांस के आने जाने में जीवन के आने के आवागमन को भी देखते हैं। तो उन्होंने फिर आगे बताया कि जैसे जो थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस जो हैं आनापान सती सूत्र की, कि प्रीति को मैं महसूस करते हुए सांस आ रहा है जानता हूँ, भी प्रीति महसूस करते हुए सांस को जानता हूँ। तो प्रसन्नता से सांस ध्यान कर रहे हैं, प्रीति प्रसन्नता महसूस हो रही है और सांस का भी जानकारी बनी हुई है। फिर उसमें जैसे एक और इंस्ट्रक्शन आती है चित्त संस्कार पटिसंवेदी, चित्त संस्कारों को जानते हुए। तो चित्त संस्कार क्या होते हैं?
फीलिंग और परसेप्शन, वेदना और संज्ञा को चित्त संस्कार कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे चित्त के बेसिस हैं जिसके आधार पर चित्त सबको समझता है। तो चित्त संस्कार जानने का मतलब है कि वो फीलिंग महसूस हो रही है, संज्ञा जो है महसूस हो रही है, सांस आ रहा है जा रहा है, तो वेदना भी महसूस हो रही है, और संज्ञा कैसी चल रही है, किस तरह से उसको पहचान रही है, वो जान रही है। मन के कैसे, जब चित्त की बात आती है तो मन के मूड कैसे हैं, हमारे सेंसिटिव हैं उसके प्रति भी, तो मन जो है शांत है, बेचैन है, जो भी है उसको भी जान रहे हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से एक संबल हो जाता है, एक एंकर हो जाता है सांस का, और फिर जो मन में अगर मूड फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं तो वो हमको परेशान नहीं करते, हमारी सेंस ऑफ वेलबींग जो होती है ठीक रहने की वो बनी रहती है। फिर एक और इंस्ट्रक्शन बताएं कि अभिपमोजयं चित्तं अस्स्य सामी सिक्खति, तो सांस को जाते हुए जानते हैं, चित्त को प्रसन्न करते हैं, और सांस जा रहा है जा प्रसन्न करते हैं, जा रहा है तो प्रसन्न करते हैं। तो इस तरह से बता रहे थे कि हम मन को शांत करके प्रसन्न करके साधना करते हैं, ताकि जो मन की टेंडेंसी होती है इधर उधर भटकने की और विचारों में खो जाने की, खासतौर पे द्वेष तरह के, द्वेष वाला के मूल के विचारों में, तो वो नहीं होता, क्योंकि चित्त प्रसन्न रहता है। फिर अंत में उन्होंने कहा कि धम्मानुपस्सना कैसे करते हैं, कि सांस को जानते हुए अनिच्चानुपस्सी की बातें आती हैं उसमें, कि सांस आ रहा है जा रहा है तो उसमें देखते हैं कि वो अनित्य है, बदल रहा है, और वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पे नहीं है, सिर्फ जान रहे हैं और लेबल करने से ही, ये दिल के स्तर पे, हार्ट के स्तर पे समझ रहे हैं इसको, कि हाँ देखो ये चीज़ें उदय होती हैं, सांस व्यय होता है और अपने आप होता है। तो इस तरह से उस ऑब्जर्वेशन को गहराई से देखते हैं, सांस की ऑब्जर्वेशन को, तो वो किस तरह से हम उसको देख रहे हैं उस पर महत्व बहुत है उस बात का। तो हमें अपना ध्यान जो है इस तरह से लगाना है कि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो, ना कि हम यंत्रवत साधना करते रहें। फिर विरागानुपस्सी का कहा उन्होंने कि हाँ ध्यान करते हुए सांस जा रहा है तो जो विराग है, वैराग्य वो जाग रहा है, कि जो मन की इम्पल्सिव टेंडेंसीज रहती हैं इधर उधर भटकने की या तुरंत प्रतिक्रिया करने की, वो शांत हो रही हैं, मन अहम का भाव शांत हो रहा है। तो जब वो सब हो रहा है तो साथ साथ इसका मतलब अवेयरनेस लेकिन बनी रहती है, और हमारी अवेयरनेस नहीं कम हो रही। फिर निरोधानुपस्सी, इस तरह पटनिसग्गानुपस्सनी की हम लोग पूर्ण ने बात की कि रिलिंक्विश कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं चीज़ों का। तो त्याग किसका कर रहे हैं? मैं का त्याग कर रहे हैं। मैं के जो काम है, मैं को जो भाव है कि मैं ये रोक के करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, उस सब बातों को, कंट्रोल की जो बात है वो छोड़ रहे हैं। जो हो रहा है उसको जान रहे हैं कि हाँ हम त्याग कर रहे हैं, छोड़ लेटिंग गो हो रहा है जो भी है। तो उस तरह से भाव बना के जब देखेंगे, उस विचार से, उस तरीके से देखेंगे, तो वही सांस जो है हमको धम्मानुपस्सना की तरफ ले जाएगा। और फिर उसका निरोध की बात आती है, तो जैसी चित्त जब शांत होता है, मान लीजिए वो संखार उठा और वो शांत हो गया, तो उसको भी जान लिया। तो जैसा भी है वैसा है, उसको जान लिया। जैसे उन्होंने कहा, कुछ समय तो कहते हैं इट इज़ लाइक दिस, तो वो उसका मतलब यही है कि हम उस चीज़ों के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, रेडिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई मन में उसके प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। तो उन्होंने बताया भगवान बुद्ध को जैसे निपपंच कहा जाता था, कि उनके मन में कोई प्रोलिफरेशन नहीं चलता, मन उनका हमेशा शांत रहता है। जो चीज़ दिख रही है उसी में दिख रहा है, और जो नहीं दिख रही है, जो दिख रही है जैसा है वैसा है, जो कहा जाता है दिट्ठे दिट्ठानुपस्सी भवति विहरति। तो ऐसे उसी तरह से देखते हुए सिर्फ देखते हैं, कोई उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता। तो इसी तरह से मन का, शरीर का, फीलिंग्स का, सबका अनुभव हो रहा है, लेकिन इस भाव से हो रहा है कि वो सब अपने आप चल रहा है, उसमें मैं का भाव नहीं रहता, अनित्य है, बहुभाव रहता है। और फिर उसके प्रति त्याग का भाव, उसको पटिनिसग्गा का भाव रहता है। तो इस तरह से हमारे सतिपट्ठान भी पुष्ट होते रहते हैं। तो ये संक्षेप में आज का प्रवचन था। तो अब थोड़ी देर उपेक्षा ब्रह्म विहार का अभ्यास करते हैं।
उपेक्षा ब्रह्म विहार, जैसे हम सब अब इतने दिनों से कर रहे हैं अभ्यास, सभी ब्रह्म विहारों का सिरमौर, अपेक्स उनका, क्योंकि उसी के आधार पे हम बाकी ब्रह्म विहारों को भी ठीक से कर सकते हैं और हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है समता के भाव से। क्योंकि सामान्य जीवन में सभी 8 लोक धर्मों से हानि लाभ सुख दुख सफलता असफलता यश अपयश ये सब होता ही है सबके साथ। उन सब 8 लोक धर्मों में चित्त हमारा कंपायमान न हो, तब हम कहते हैं कि हम समता में उपेक्षा भाव में स्थापित हो गए हैं। उपेक्षा का एक और इक्विवेलेंट शब्द अभिधम्म में इस्तेमाल किया जाता है, तत्र मज्जता, मतलब बीच में रहना, बैलेंस बनाए रखना। वो भी एक बहुत अच्छा शब्द है जिसको हम समझ सकते हैं। उपेक्षा को समझने इसका मतलब ये नहीं कि हम उदासीन हो रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारे अनुभव में आ रहा है उसको जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये ऐसा है, इट इज़ द वे इट इज़, और मन को बेचैन नहीं होने दे रहे। हमारे पर्सनल लाइफ में परेशानी है, उसके अंदर बेचैन नहीं हो रहे, और इस समय तो सारे विश्व में, सारे हमारे शहर में, देश में, पड़ोस में, चारों तरफ परेशानी परेशानी है। उसको जानते हैं तो मन व्यथित नहीं होता, जानते हैं और फिर चित्त समता में रहता है और देखते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो करते हैं, तो वो करुणा के भाव से प्रेरित होकर कुछ करते हैं। तो जब चित्त समता में रहता है तो करुणा जागती है, समता में नहीं रहता तो व्यथा जागती है। तो वो भेद बहुत महत्वपूर्ण है। तो समता का आधार हमने समझा जैसे कई बार कि सम्यक दृष्टि हो, हमारी दृष्टि ठीक हो, हम प्रज्ञा से स्थापित हो, तभी समता बन पाएगी। क्योंकि तभी हम अनित्य बोध में पुष्ट होंगे, दुख बोध में पुष्ट होंगे, अनात्म बोध में पुष्ट होंगे। बहुत आवश्यक। उसके सम्मा दृष्टि के कई रूप। लोकीय सम्मा दृष्टि हमने जैसे समझा कर्म सिद्धांत, कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, सुख है दुख है, वो हमारे अपने कर्मों के फल के रूप में है, विपाक चित्त है। और अब हम जैसे कर्म करेंगे उससे हमारा भविष्य बनेगा। तो न हम पुराने कर्मों को लेके परेशान रहेंगे, जो है वस्तु स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे कर्म करें ताकि भविष्य हमारा और सुधर जाए। और कई बार जैसे चर्चा हुई पहले भी कि अपने दुख का कारण दूसरों को मान के, और वो भासमान सत्य भी हो सकता है, तो मन में बहुत रोष जागता है, नाराज़गी जागती है, द्वेष जागता है। तो कर्म सिद्धांत हमको उस गलत डायरेक्शन में जाने से रोकता है कि नहीं, हमारे कर्मों का फल है, कोई और तो उसका माध्यम बन गया। तो इसलिए कर्म सिद्धांत की याद रखना बहुत आवश्यक। तो उपेक्षा भावना को पुष्ट करने के लिए, उसका प्रस्फुटन करने के लिए हम कर्म सिद्धांत को याद करते हैं पहले। कम्मस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। तो कर्म ही हमारा बंधु है, कर्म ही हमारी शरण है, और कर्म ही हमारा जीवन है, योनि है। तो इस भाव को ठीक से समझते हुए और ये जानते हुए कि जैसे जैसे कर्म हम करेंगे कल्याणकारी या पापकारी, वैसा ही उनका फल आने वाला है। तो इससे प्रेरणा जागती है कि हम भविष्य के कर्म को और सजग होकर करें। पर बहुत गहराई से तो सम्मादिष्टि हमारी 4 आर्य सत्यों को देखने से ही, जैसे आज रतन सूत्र की चांटिंग में भी आया, वो गाथा थी, यथिंद खीलो पथविंसितोसिया चतुर्भिवाते ही असंपकंपियो तथोपमा सपुरुषं वदामि यो ये सच्चान अवेच्च पश्यति। वह पुरुष जो 4 आर्य सत्यों को
निरंतरता से देखता है, उनका साक्षात्कार करता है, तो उसकी चित्त की उपमा एक खंबे से दी जाती है जो पृथ्वी में गहराई से गड़ा हुआ है और किसी भी तरह की वायु से कांपता नहीं है, वो तो बिल्कुल स्थापित है। जैसे हम कई बार उस मंगलसूत्र में भी पाठ करते हैं, फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति। वो तभी होगा जब आर्य सत्यों को हम ठीक से देख पाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट होगा कि दुख का कारण मेरी अपनी तृष्णा है, तो हमारी उपेक्षा भावना, हमारी समता बहुत पुष्ट होती है। तो इनका चिंतन करते हुए और जो परिस्थितियां हैं हमारे अपने जीवन में या आस पड़ोस में, अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, विश्व में, उनको याद करते हुए समता का बनाए रखने का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर, और देखते हैं शरीर में वो उपेक्षा भावना की तरंगे धीरे धीरे व्याप्त होने लगेंगी। अब शरीर के करुणा उपेक्षा भाव की तरंगों को सभी दिशाओं में व्याप्त करते हैं, जैसे भगवान के आदेश हैं ब्रह्म विहार साधना के। उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति। तो एक दिशा में चित्त को उपेक्षा भावना से व्याप्त करके विहार करते हैं, सामने की दिशा देख लेते हैं और उस दिशा में जो भी हम परिस्थिति जानते हों, अपने स्वजनों की, मित्रों की या अस्पतालों की, उसको याद करके चित्त को समता में स्थापित करने का अभ्यास करते हैं। और ये तरंगे हैं उस तरफ अपने आप प्रवाहित होती हैं, तो इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सभी हम लोग समता में रहें, सभी हमारे जानकार, सभी प्राणी जो इस दिशा में हैं, वे सभी समता में रहें, उपेक्षा भावना में पुष्ट हों,
दुख के कारण को समझें, परेशानी के कारण को समझें, चार आर्य सत्यों को समझें, कर्म सिद्धांत को समझें ताकि चित्त कंपायमान न हो। ऐसी भावना से इस दिशा को व्याप्त करते हैं और फिर रोज की तरह एक एक करके 10 दिशाओं में तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति अधोत्तम ऊर्ध्वम् अधो तिर्यं सब्बती सब्बतताय सब्बावन्तं लोकम्। इस प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी डायरेक्शन में, फिर ऊपर की डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन और आड़े तीसरे बाकी 4 डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में अपने प्रति और सभी लोग के प्रति, सभी लोगों के, प्राणियों के प्रति उपेक्षा भाव स्थापित करने का भाव बनाते हैं कि हमारा मन उपेक्षा में स्थापित हो, सभी प्राणियों का मन उपेक्षा में स्थापित हो। हर एक दिशा में जिन जिनको हम जानते हों, जैसे परिस्थिति, उनको याद करके, उनका मन में चित्रण करके शुभकामना सभी उपेक्षा भाव में स्थापित हों, हम भी स्थापित हों, वो सब स्थापित हों। हम कुछ अपने मित्रों को जानते हों, सज्जनों को जो बहुत व्यथित हैं किसी कारण से, खास तौर पे उनको याद करके उनका चित्र मन में लाके ये शुभेच्छा प्रकट करते हैं कि आप सब दुख के कारण को पहचानें, कर्म सिद्धांत को समझें और उपेक्षा भाव में, समता भाव में पुष्ट हो। ऐसी शुभकामनाएं। उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन अवेरेन व्यापजेन परित्वा विहरति। तो फिर भगवान का ये आदेश कि विपुल, महान, अप्रमद, असीम उपेक्षा भाव से, द्वेष के बगैर, वैर के बगैर मन से सारी दिशाओं को व्याप्त करके मैं विहार करता हूँ।
तो ऐसा अनुभव करते हैं थोड़ी देर, चित्त और मन की परिस्थिति को जानते हुए भगवान के आदेश का पालन, उपेक्षा सहगतेन फरित्वा विहरति। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमत्, मा किञ्चित् दुःखमागमत्, मा किञ्चित् दुःखमागमत्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु मे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।